हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 एडवांस्ड फीचर ऑफ क्यू बेसिक स्टार्ट किया था। तो ये क्यू बेसिक है, ये लोगों की तरह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम इनपुट देंगे, कमांड्स देंगे और हमारा रिजल्ट आएगा। जैसे कि हमें कोई फिगर ड्रॉ करनी है या तो फिर हमें कोई सेम स्टेटमेंट रिपीट करना है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो क्यू बेसिक के बारे में हम धीरे धीरे 1 बाय 1 टॉपिक देखकर उसके बारे में सीखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है 6.1 इटरेटिव स्टेटमेंट्स। In your previous class, you have developed programs in which statements are executed only once. However, sometimes we need to repeat a set of statements a number of times. हमने 6 स्टैंडर्ड में ऑलरेडी क्यू बेसिक में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कोई स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूटिव होते हुए हमने देखा, जो कि हम 1 टाइम करते थे। लेकिन कभी कभी क्या है, ये जो स्टेटमेंट्स का सेट होता है वो हमें बार बार चाहिए होता है और नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए होता है। देन iterative statements are used in this situation. Iterative statements also known as loops. तो ये जो statements है उसे loops भी कहा जाता है. Enables you to execute the same sequence of statements repeatedly until a particular condition is met. There are various types of loops in QBasic like while, when, do loop and for next loop. Let us discuss them one by one. तो ये जो इटरेटिव स्टेटमेंट्स है ये क्या करता है, कोई स्टेटमेंट्स को नंबर ऑफ टाइम रिपीट करता है या तो फिर नंबर ऑफ टाइम उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। तो इसके लिए इसमें हम यूज़ करते हैं वाइल, व्हेन लूप, डू लूप, फॉर नेक्स्ट लूप। ये सारी लूप का यूज़ हम इसके अंदर करते हैं। तो 1 बाय 1 हम देखेंगे कि इस लूप से क्या एग्जीक्यूट होता है। फर्स्ट इज वाइल व्हेन। The while when loop executes a set of instructions as long as given condition is true. The syntax of the while when loop is given here. While in bracket condition instruction list when where condition is equal to a logical operation. condition में हमें logical operation देना है and instruction list में हमें instruction to be executed repeatedly. जो भी हमें repeat करना है ये हमें यहाँ पर देना है। The step in the execution of instruction in a while when loop are given here. Number 1, condition is evaluated. Number 2, if condition evaluates to true, instruction list is executed. Otherwise, the control is transferred to the instruction immediately after when. Number 3, the when statement transferred the control back to step 1. Example 1. Using while when loop in a program. CLS x is equal to 10 while x less than 15. Print the value of x is x. X is equal to x plus 1 when and in this program a variable x is declared and assigned a value 10. The while statement checks the value of x. If the value of x is less than 15, the print statement prints the message with the current value of x. The next statement increments the value of x by 1. Then when statement transfers the control back to the while statement. The condition is evaluated and print statement is repeatedly executed 5 times until the value of variable x become 15. तो इस तरह से हम while when loop का यूज़ करके हम जो भी हमें कंडीशंस देते हैं उस कंडीशन को वो बार बार क्या करता है, चेक करता है और जिस तरह उसका रिजल्ट आता है उस तरह से हमें हमारे आउटपुट में उसका रिजल्ट देता है। नेक्स्ट लूप इज डू लूप. Do loop is another type of loop that repeats a block of instruction while a condition is true or until a condition becomes true. There are two different syntax of using do loop which are given here. Syntax 1, do in square bracket, in bracket, while, until and then condition. Then after next line instruction list. Last loop. The steps for the execution of instruction in this loop are given here. First, condition is evaluated. Next, when while keyword is used, instruction list is executed if condition is true. The loop statement transfers the control back to the do statements which again evaluates condition. In this way, instruction list is executed repeatedly till condition remains true.
When condition becomes false, the loop terminates and the control is transferred to the statement immediately after loop. Or when the until keyword is used, instruction list is executed if condition is false. The loop statement transfers the control back to do statement. In this way, instruction list is executed repeatedly until condition becomes true. When condition becomes true, the loop terminates and the control is transferred to the statement immediately after loop. तो जहाँ तक हमारी कंडीशन मैच नहीं होती वहाँ तक ये चीज़ कंटिन्यूअस होती जाती है. जब हमारी कंडीशन मैच हो जाती है देन हमारा रिजल्ट आ जाता है हमारे आउटपुट के अंदर. नेक्स्ट सिंटैक्स इज सिंटैक्स नंबर 2. डू इंस्ट्रक्शन लिस्ट लूप while until condition. The steps for the execution of instruction in this loop are given here. Number 1, instruction list is executed. Number 2, condition is evaluated. Number 3, when the while keyword is used, the control is transferred to the do statement. If condition evaluates to true, instruction list is again executed. In this way, instruction list is executed repeatedly while condition remains true. When condition becomes false, the loop terminates and the control is transferred to the statements immediately after loop. Or when the until keyword is used, the control is transferred to the do statement if condition evaluates to false. Instruction list is again executed. In this way, instruction list is executed repeatedly until condition becomes true. When condition becomes true, the loop terminates. The control is transferred to the statement immediately after loop. Example 2 is using while in a do loop. CLS x is equal to 10, do while x less than 15. Print x is equal to x plus 1, loop and then result is here. Using do while loop हमें यहाँ पर आउटपुट ये मिलेगा. In this program, a variable x is defined and initialized with a value 10. The do while statement evaluates the condition x less than 15. If the condition evaluates to true, the control is transferred to the statement print x. If prints the value of variable x, the next statement increments the value of x by 1. The loop statement transfers the control back to the do while statement. The loop is executed 5 times and when the value of x becomes 15, the program terminates. Next, third example is using until with the loop statement. CLX x is equal to 10, do print x is equal to x plus 1, loop until x greater than 14 and using do loop हमें ये आउटपुट मिलेगा. In this program, a variable x is defined and assigned a value 10. The print x statement prints the value of the variable x. Then the value of x is incremented by 1. The loop statement evaluates the condition x greater than 14. If the condition is evaluates to false, the control is transferred back to the do statement. In this way, the loop is executed 5 times and when the value of x becomes 15, the program terminates. तो यहाँ पर जिस तरह से हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे जब तक उसकी वैल्यू 14 के प्लस 1 15 होने तक ये आती है, तब वहाँ तक इस लूप को कंटिन्यूअस चलाई जाती है और जब हमारा रिज़ल्ट इसकी कंडीशन से मैच हो जाता है तब यहाँ पर ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है. नेक्स्ट लूप इज़ for next loop. The for next loop is used to repeatedly execute a statement or a block of statement for the specified number of times. The for next loop is used when the exact number of iteration required is known. The syntax of the for next loop is given here. For control variable is equal to start to end step increment block of instruction. Next, control variable where control variable is equal to a numeric variable that is used as a loop counter. Start means the initial value of control variables and the final value of control variable. Increment
the value by which control variable is incremented each time through the loop, and block of instruction is instructions to be executed repeatedly. The steps for the execution of instruction in the for next loop are given here. First, the value of control variable is initialized with start. The value of control variable is compared with the value of AND. If the value is less than or equal to the AND value, block of instruction is executed. After reaching next, the value of control variable is incremented by the value specified by increment in step. Again, the value of control variable is compared with that of AND. If the condition evolves to true, the loop is executed again. This process is repeated as long as value of control variable is less than or equal to AND. When the value of control variable becomes greater than AND, the loop is terminated and the statement after the next are executed. Next example is example 4. Using for next loop to print integer from 1 to 5. CLS for number is equal to 1 to 5. Print number, next number, and. In this program, the control variable number is assigned a start value 1 and end value is 5. Start value 1 है और end value 5 है. The statement prints the number, prints the value of number. The control then goes to statement next number. This statement adds 1 to number and transfer the control back to the for statement. Again, the value of number is compared with the AND value, that is 5. If the number has not exceeded the AND value, the new value of number is again printed, that is 2. In this way, the print number statement is executed 5 times. When the value of number exceeds, the program terminates. You can also use step to specify by what value the control variable should be incremented each time in the loop. 1 by 1 जो वैल्यू प्रिंट होती है उसे +1 करके आगे की वैल्यू भी यहाँ पर प्रिंट होती है. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 5. यूजिंग स्टेप विद द for next loop. CLS for number is equal to 1 to 5. Step 2, print number, next number, and. In this program, the control variable number is assigned a start value 1 and the end value is 5. Step 2 is used to specify that number will be increased by 2 each time the loop executes. The print number statement prints the value of number. The statement next number increments the value of number by 2 and transfers the control back to the for statement. In this way, the loop is executed 3 times. Using step with for next loop, here is the result 1, 3, 5. यहाँ पर क्या होता है कि 2 नंबर आगे जाके एक एक वैल्यू प्रिंट होती है, 1, then 3, then 5, इस तरह से. Next is nesting of loops. Sometimes 2 or more loops are used in a program where one loop is contains another loop within it. This is known as nesting of loops. कभी कभी क्या होता है कि हम 2 से ज़्यादा लूप्स का प्रोग्राम में यूज़ करते हैं और जो लूप हम यूज़ करते हैं उसके अंदर अनदर लूप होती है, तो इसे कहते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप्स, एंड सच लूप्स आर कॉल्ड नेस्टेड लूप्स. एग्जाम्पल 6, नेस्टिंग ऑफ 4 लूप्स इन प्रोग्राम. CLX for x is equal to 1 to 2 prints outer loop. For y is equal to 1 to 2 print inner loop. Next y, next x, and. In this program, 2 for loops have been used, first with the control variable x and second with the control variable y. For each execution of the outer loop, the inner loop executes 2 times. Hence, the text inner loops is printed 2 times. After each printing of the text outer loop, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने लूप स्टार्ट किए, उसमें आउटर लूप आ रहा है और 2 टाइम इनर लूप, अगेन आउटर लूप, 2 टाइम इनर लूप. तो इसे कहते हैं नेस्टिंग ऑफ 4 लूप्स. हमने एक के अंदर एक लूप डाला और इसे कहते हैं नेस्टिंग लूप. नेक्स्ट इज टर्मिनेटिंग लूप्स. एनी लूप कैन बी टर्मिनेटेड prematurely using the exit command. For this, the name of the loop such as for or do has to be specified after exit. Example 7. Using the exit command in a for next loop.
CL as for I is equal to 1 to 5. Input, enter numbers from 1 to 5 number. If number is greater than 5, then print loop terminated. Exit for sum is equal to sum plus num. Next, I print the sum of first I minus 1 number is sum and. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉर्मल टर्मिनेट ऑफ लूप फिगर में दिखाया गया है एंटर्स नंबर फॉर फ्रॉम 1 to 5, देन आंसर इज 2, 4, 1, 3, 5. जिस तरह से हम डालते हैं उसी तरह से आता है. द सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 15. अभी जो दूसरा है वो प्री मेच्योर टर्मिनेट ऑफ लूप है, उसमें एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 5, 1, 2, 3, 4 and 7. लूप टर्मिनेटेड द सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 10. तो यहाँ पर क्या होता है कि लूप टर्मिनेट होती है नॉर्मल एंड प्रीमेच्योर. इस तरह से हम प्रोग्राम का रिजल्ट भी पा सकते हैं. इन दिस प्रोग्राम द यूजर इज आस्क्ड टू एंटर द नंबर फ्रॉम 1 to 5. यहाँ पर जब हम इसका रिजल्ट आउटपुट करते हैं तभी वहाँ पर हमें पूछते हैं नंबर्स के लिए. हमें यहाँ पर नंबर्स प्रिंट करने होते हैं 1 to 5 में से. द 4 next loop runs 5 for I is equal to 1 to 5. The loop breaks if the user enters a number greater than 5. The statement exit 4 causes the program to terminate the loop. After the loop has been executed, the print statement prints the sum of the number. और लास्ट में जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके साथ हमारा जो सम है वो करके नंबर्स ऐड करके हमें रिजल्ट आउटपुट में हमारा यहाँ पर मिल जाएगा. तो जहाँ तक हमने आज चैप्टर रिफ़र किया है वहाँ तक आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसे अच्छे से समझना है. नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.